हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और इससे पहले हमने 2008 जून तक का पेपर हमने देख लिया है। जो लोग इस पे अभी नए जुड़े हैं या अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 2004 से हमारे पास सारे पेपर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के पड़े हुए हैं। अगर आपको उनको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूजीसी नेट पेपर पे सर्च करिए और आपको वो सारे पेपर जो कि सॉल्व हमने अब तक किए हुए हैं आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है दिसंबर 2008 का पेपर। द विक्टोरियन पीरियड रिफर टू द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग। क्या टाइम पीरियड रहा है विक्टोरियन एज का, ये पूछ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1837 से 1901. The Victorian era of a British history was a period of Queen Victoria reign from 20th June 1837 से until her death on 22nd January 1901. It has a long period of peace, prosperity, refined sensibility, national self-confidence for Britain. सो येस, जो विक्टोरियन पीरियड का जो एरा है वो रहा है 1837 से 1901. देन क्वेश्चन नंबर 2, द रैम्बलर अपीयर्ड एवरी वॉट। रैम्बलर ये जो पीरियोडिकल था ये किन किन दिन पे आता था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्यूसडे एंड सैटरडे. द रैम्बलर वॉज अ पीरियोडिकल स्ट्रिक्टली अ सीरीज ऑफ शॉर्ट पेपर बाई सैमुअल जॉनसन पब्लिश्ड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे फ्रॉम 1750 टू 1752. और इसमें टोटल 208 आर्टिकल्स आए थे. क्वेश्चन नंबर 3, टोटल मिसलेनी कंटेन्ड कितने सॉनेट्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज 60 सॉनेट्स. सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स यूजुअली कॉल्ड टोटल मिसलेनी. इट वाज द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फर्स्ट पब्लिश्ड बाय रिचर्ड टोटल इन 1557 इन लंडन. इसमें टोटल 60 सॉनेट्स थे. क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है ये टर्म। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, टी.ई. ह्यूल्म. और Imagism was movement in early 20th century Anglo-American poetry, had favored precision of imagery and clear, sharp language. And the Thomas Ernest Hume was aesthetic philosopher and the father of Imagism. So question number 5, the title Things Fall Apart is drawn from a poem by. So इसका correct answer है A, W.B. Yeats. Things Fall Apart is post-colonial novel written by Nigerian author Chinua Achebe in 1958. It is seen as archetypal modern African novel in English. The title The Things Fall Apart is drawn from the poem Second Coming by W.B. Yeats. Question number 6, formal criticism related to a structure of. So correct answer है इसका literary device. Formalism is a school of literary criticism and literary theory having mainly to do with structural purpose of particular text. It is the study of text without taking into account any outside influence. Question number 7, a foot in parody is a basic unit of. इसका correct option is C, rhythmic measurement. The foot is the basic metrical unit that forms a part of line of verse in most Western tradition of poetry. The unit is composed by syllables, the number of which is limited. So question number 8, who of the following is known as aphoristic prose style? कौन जो है known for aphoristic prose style के लिए जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज फ्रांसिस बेकन. फ्रांसिस बेकन इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज. He evolved the prose style that proved for the first time that English could also be used to express subtle thought. सो ये एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वॉज रिटन बाय. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज डी क्विंसी. कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821 is an autobiographical account written by Thomas D. Quincy. It is about his addictions and its effect on his life. Question number 10, Ireland emerges as the most important metaphor in.
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सीएमएस हियनी। ये एक आयरिश पोएट, प्ले राइट एंड लेक्चरर हैं एंड ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1995। क्वेश्चन नंबर 11, शेक्सपियर प्लेज को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, तो चलिए देख लेते हैं। Much Ado About Nothing, written in 1598, 1599, published in 1600, so ये सबसे पहले आएगा। Then Hamlet, written between 1599 and published in 1603, तो दूसरा नंबर। King Lear was written between 1605 or 1606, published in 1608। Troilus and Cressida 1609, तो सबसे लास्ट में। Much Ado About Nothing, Hamlet, King Lear and Troilus and Cressida। Question number 12, the major contribution of restoration period is in the field of, so इसका correct option है B, that is poetry। Restoration literature is written during the historical period commonly referred to as the English Restoration, जिसका टाइम फ्रेज रहा है 1660 से 1689 के बीच में। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड ऑल मेजर पोएट ऑफ period like Samuel Butler, John Dryden, Alexander Pope, etc. wrote poetry during this period। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्रोनोलॉजी देखनी है आपको, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं वॉल्टर स्कॉट। ये एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट हैं और इनका बर्थ हुआ है 1771, डेथ हुई है 1832। उसके बाद आते हैं लॉर्ड बायरन, जिनका बर्थ होता है 1788 में और 1824 में इनकी डेथ हो जाती है। थर्ड पे आते हैं पीबी शैली, जिनमें एक रोमांटिक पोएट हैं ये, इनका बर्थ होता है 1792 में और 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। और सबसे लास्ट में आते हैं जॉन कीट्स, इनका बर्थ होता है 1795 में और 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड इज अ नॉवल। वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड इज अ नॉवल, ये है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है बी, E.M. फ्रॉस्टर। सो वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेंड 1905 में लिखा हुआ एक नॉवल है E.M. फ्रॉस्टर के थ्रू। ओरिजिनल इसकी जो टाइटल थी वो थी मॉन्टेरियानो, इसकी ओरिजिनल टाइटल थी, और द टाइटल कम फ्रॉम द लाइन ऑफ एलेक्जेंडर पोप्स एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, फॉर फूल रश इज वेयर एंजल फेयर टू ट्रेड। सो ये जो टाइटल है अलेक्जेंडर पोप के एसे ऑन मैन से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्ले ऑफ एडवर्ड एल्बी डील्स विद, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिपोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। हिपोक्रेसी ऑफ एरिस्टोक्रेसी के को डील करता है एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बे के जितने प्ले हैं, और ही इज़ एन अमेरिकन प्ले राइट। और इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो हैं द सैंड बॉक्स, द जू स्टोरी, हु अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 16, हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज 7 metrical feet। Heptameter is type of meter where each line of verse contains 7 metrical feet. It was used frequently in classical prosody, and in English the line was used frequently in narrative poetry since the Romantics। Question number 17, in formalistic school of criticism art is, so इसका correct option है D, style। Formalistic school is the basic line of formalism of literary criticism and literary theory. In art history, formalism is a study of art by analyzing and comparing form and style, the way objects are made, and their purely visual aspect. So, in formalistic school of criticism, art is what? Style. Question number 18. The Loneliness of the Long Distance Runner is a novel by, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज एलन सिलिटो। सो द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज अ शॉर्ट स्टोरी, इसमें शॉर्ट स्टोरी दिया हुआ है बाय एलन सिलिटो। इसको पब्लिश किया गया था 1959 में। अब इसको देखना पड़ेगा, इसको मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि वेदर इट इज़ नॉवल और अ शॉर्ट स्टोरी। इफ़ यू पीपल नो देन प्लीज़ कॉमेंट इन द comment section। Question number 90, Rugby Chapel is a poem by Matthew Arnold in the memory of his,
किसके मेमोरी में इन्होंने लिखा था रग्बी चैपल? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, अपने फादर को याद करके लिखा था. वॉज अ ब्रिटिश पोएट. मैथ्यू आर्नल्ड वॉज अ ब्रिटिश पोएट, अ क्रिटिक ड्यूरिंग विक्टोरियन era. In 1837, Arnold first attended the rugby school where his father was the headmaster. Question number 20. The earliest women novelist of significance in the 18th century. So इसका करेक्ट ऑप्शन है A, that is Mary Edgeworth. Mary Edgeworth was an Anglo-Irish writer of adult and children literature. She was one of the first realist writer in children's literature. Question number 21. Cut is the branch that might have grown full straight. So ये लाइन किस में आई है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज डॉक्टर फॉस्टस. डॉक्टर फॉस्टस की ये लाइन है. द ट्रैजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, कॉमनली रिफर्ड एज डॉक्टर फॉस्टस, इज अ प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो, पब्लिश्ड इन 1604. Then question number 22. Pope essay on man can be best be read as a poem of. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, philosophical apprehension of life. An essay on man is a poem published by Alexander Pope in 1733-34. It is an effort of rationalize, or rather vindicate, the way of God to man, a variation of John Milton's claim in opening line of Paradise Lost that he will justify the ways of God to men. Question number 23. The term Victorian evokes the attitudes of. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज moral earnestness. The term Victorian was first used during the Great Exhibition in London 1851, where Victorian inventions and morals were shown to the world. Question number 24. Larry Slade is a character in. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज द Iceman Comet. Iceman Comet is a play written by American playwright Eugene O'Neill in 1939 and published in 1946. The character Larry Slade is a former syndicalist anarchist in the play. Then question number 25. Iambus is a metrical food consist of. इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 syllable. The iambic or iambus is a metrical food used various form of poetry. It refer to a food comprising 2 syllable and unstressed syllable followed by stressed syllable. Question number 26. अब ये लाइन है, आपको समझना है कि कहाँ पे यूज हुआ है. Not that he wished is greatness to create. For politicians neither love nor hate. ये जो है किसकी लाइन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एप्सिलम एंड एरिस्टोफिल, जो कि एक पोएटिक political satire था जॉन ड्राइडन का. The poem is an allegory that used the story of rebellion of Absalom against King David. Question number 27. 1396 definition of romanticism were given by. So इसका correct option है D, that is F.L. Lucas. The Decline and Fall of Romantic Idols 1948 में ये बुक आई, जिसको लिखा F.L. Lucas ने. Counted 11,396 definition of romanticism. Lucas was an English classical scholar and literary critic. Question number 28. The term stream of consciousness is derived from the writing of. इसका correct option है C, William James. In literary criticism, stream of consciousness, also known as interior monologue, it is the narrative mode or device that depicts the multitudinous thought and feeling which pass through the mind. The term was coined by William James in 1890 in his book The Principle of Psychology. Question number 29. Scene O'Casey, Juno and the Peacock is. ये क्या है, इनका कौन सा वर्क है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रेजाई कॉमेडी. जूनो एंड द पीकॉक इज द प्ले बाय सीन ओकैसी. द प्ले इज हाईली रिगार्डेड एंड ऑफन परफॉर्म्ड इन आयरलैंड. It is set in the working class tenement of Dublin in early 1920 during Irish Civil War period. Question number 13. The reader response theory implies that. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, द रीडर ऑफ एन एज कंस्ट्रक्ट द मीनिंग.
Reader response criticism is a school of literary theory that focus on reader and their experience of literary work. Modern reader response criticism began in the 1960s and 70s, particularly in the US and Germany, in the works of Ronald Barthes etc. रीडर रिस्पॉन्स का मतलब ये हो गया कि उनका जो क्रिटिक्स थे वो ऐसा मानते थे कि जो रीडर्स पढ़ेंगे और जो उसका मीनिंग डिराइव करेंगे पढ़ के, वही जो है वो ट्रू मीनिंग होगा टेक्स्ट का. क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट मैच है. सो इसका जो करेक्ट मैच है वो है ब्राउनिंग द रिंग एंड द बुक. रिंग एंड द बुक इज अ लॉन्ग ड्रामेटिक नरेटिव पोएम and more specifically a verse novel of 21,000 lines written by Robert Browning. It was published in 4 volumes from 1868 to 1869 by Smith, Elder and Company. Then 32, myth criticism focus on. So इसका correct option है C, recurrence and archetypal pattern. Myth criticism is mainly known as archetypal literary criticism. Archetypal literary criticism is a type of critical theory that interpret a text by focusing on recurring myth and archetypes in the narratives, symbols, images, and character type in literary work. As a form of literary criticism, it dates back to 1934 when Maud Bodkin published Archetypal Pattern in Poetry. सो मिथ क्रिटिसिज्म को ही आर्केटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है रिकरेंस और आर्केटाइपल पैटर्न के ऊपर फोकस करता है. Question number 33, the phrase disassociation of sensibility was first used by. So इसका correct answer है T.S. Eliot. Disassociation of sensibility is a literary term first used by T.S. Eliot in his essay Metaphysical Poet, 1921. It refers to the way in which intellectual thought was separated from the experience of feeling in 17th century poetry. और इसमें इन्होंने जॉन डन के बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया है जो हमने पिछले पेपर्स में देखे हैं. Then question number 34, the idyll is usually a poem about. So इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पिकारेस्क कंट्री लाइफ. आइडल और द आइडल इज अ शॉर्ट पोएम डिस्क्रिप्टिव रस्टिक लाइफ रिटन इन अ स्टाइल ऑफ Theocritus short pastoral poem. The idyll, unlike Homer or Theocritus, didn't engage in hero and warfare. His idylls are limited in a small, intimate world and describe scene from everyday life. Question number 35. The lost generation referred to the generation that came to maturity in the. इसका करेक्ट ऑप्शन है 1920s. The lost generation was generation that came of age during World War I. The term was popularized by Ernest Hemingway, who used it as one of 2 contrasting epigraph for his novel The Sun Also Rise, 1926. Question number 36. The French Revolution had significant impact on. इसका correct option है B, romantic literature. The French Revolution was a period far-reaching social the French Revolution was a period of far-reaching social political upheaval in France that lasted from 1789 until 1799. Question number 37. In which poem does following line appears? Our birth is but a sleep and a forgetting. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, immortality ode. Ode intimation of immortality from recollection of early childhood, also known as Immortality Ode, is a poem by William Wordsworth, completed in 1804. Question number 38. Tale of a Tub is about. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, that is contending religious parties. D. A Tale of a Tub was the first major work written by Jonathan Swift. His most difficult satire and perhaps his most masterly, the tale is a prose parody divided into sections, composed in 1694 and 97. It was eventually published in 1704. It was long regarded as satire on religion. Question number 39. Congreve, the way of the world end with. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, reconciliation of petulant
Whitwood. The Way of the World is a play written by the English playwright William Congreve. It premiered in early 1700 March, and it is widely regarded as one of the best restoration comedy. It ends with the reconciliation of petulant Whitwood. Question number 40. On seeing whom does Miranda exclaim, "O Father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about"? इसको किसने बोला है, किसको देख के बोला इसने, मिरिंडा ने इसको? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फर्डिनेंड. द अबव लाइन have been taken from the Shakespeare famous play The Tempest, written in 1610 and 11. और जब मिरिंडा फर्स्ट टाइम फर्डिनेंड को देखती है तो उसने ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उससे पहले वो जिस आइलैंड पे रहते थे वहाँ उसने अपने दोनों मतलब फादर को अपने और खुद को छोड़ के और किसी भी ह्यूमन को नहीं देखा था. तो इसलिए जब वो फर्डिनेंड को फर्स्ट टाइम देखती है तो वो उसका ये स्टेटमेंट देती है. क्वेश्चन नंबर 41. सेक्युलर इन्फ्लुएंस ऑन द अर्ली इंग्लिश ड्रामा वर. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज मिडिल क्लास लाइफ, मॉरल बिलीफ एंड अपराइजिंग ऑफ द subalterns. Secular influence on the early English drama were middle class life, moral belief and uprising of subalterns. ये है secular influences का मतलब. Question number 42. John Bunyan's The Pilgrim's Progress was written while he was. कहाँ थे जॉन बैनियन जब उन्होंने पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिजन में थे, इन प्रिजन. सो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस is a 1678 Christian allegory written by John Bunyan. It is regarded as one of the most significant work of religious English literature. Bunyan wrote this while he was in Bedford jail. Question number 43. The juvenile satire is speaker. In juvenile satire, the speaker is. इसका correct option है a serious moralist. Option D. Juvenile satire came into existence often after Roman satire juvenalian satire. तो ये जुवेनाइल जो रोमन सटायरिस्ट थे उनके बाद ये आया. He wrote a collection of satirical poem named Satires in the late 1st century and early 2nd century AD. सो जुवेनालियन सटायर जो है वो जो उसमें स्पीकर होता है वो सीरियस मॉरलिस्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 44. जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस मोस्ट क्लियरली शो द इन्फ्लुएंस ऑफ. किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज रिचर्ड. सैमुअल रिचर्डसन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नॉवेल. His major novels were Pamela, Clarissa. Richardson was Jane Austen's favorite novelist. और प्राइड एंड प्रेजुडिस पे सैमुअल रिचर्डसन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनके जेन ऑस्टिन के इस वर्क पे. क्वेश्चन नंबर 45. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द इवैल्यूएनिस्ट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड वॉज. कौन इवैल्यूएनिस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पीरियड का? इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज चार्ल्स डार्विन. इन्होंने अपनी थियोरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था थियोरी. 46. द फिलोसॉफिकल एटीट्यूड परवेडिंग मच ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इज. इसका करेक्ट ऑप्शन है A, absurdism. Absurdism is a philosophical attitude pervading much of modern drama and fiction, which underline the isolation and alienation that human being experience. 47. The term magic realism was first introduced by. इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रेंज रो. The term magical realism first appeared in 1955, although the term मैजिशर रियलिज्म मतलब ये फ्रेंच वर्ड है. सो इसको ट्रांसलेट किया गया मैजिकल रियलिज्म में, और इसको नॉट फ्रेंच वर्ड, इट इज़ अ जर्मन वर्ड, सॉरी. सो इसको सबसे पहले जर्मन क्रिटिक फ्रेंज रो ने यूज़ किया था 1925 में. मैजिक रियलिज्म इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ मैजिक इन द रैशनल वर्ल्ड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैब्युलिज्म और मार्वलस रियलिज्म. सो मैजिकल रियलिज्म का ये जो टर्म है ये एक जर्मन क्रिटिक ने दिया जिनका नाम फ्रेंज रो था, और 1925 में दिया गया है, और इसी से रिलेटेड हैं
मार्कीज़ भी, सो हो सकता है कि पूछ दे कि कौन कौन से क्रिटिक मैजिक रियलिज्म में रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट who for the first time addressed the question of language and indigenous experience was? So इसका करेक्ट आंसर है बी, आर के नारायण। आर के नारायण का पूरा नाम था रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, एंड ये एक इंडियन राइटर थे जिनको कंपेयर किया जाता है विलियम फॉकनर से, एंड ही ऑल्सो क्रिएटेड अ फिक्शनल टाउन स्टूड फॉर रियलिटी। नारायण is the first to address the question of language and indigenous experience in the Indian English fiction. Then question number 49, G.V. Desai's All About H. Hatter is written in the, इनका ये जो वर्क है ये किसके बारे में है, मतलब किस तरीके का वर्क है? सो इसको 49 का ऑप्शन है सी, पिकारेस्क मोड में इसको लिखा है। ऑल अबाउट एच हैटर इज़ अ नॉवल बाय जीवी देसाई क्रॉनिकल एंड एडवेंचर्स ऑफ एंग्लो मलय मैन इन सर्च ऑफ विजडम एंड एनलाइटमेंट। तो ये एक पिकारेस्क मोड है। देन क्वेश्चन नंबर 50, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी डी ई एफ जी। सो ये है अप टू 50 क्वेश्चन दिसंबर 2008 का पेपर, और इसके बाद 2009 का पेपर, 10 का पेपर भी आएगा। एंड हैव पेशेंस, जिनको 2019 का पेपर चाहिए तो बिल्कुल वो भी आएगा, बट सीरियल से आएगा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज हैफिजेड हो जाता है पेपर तो ठीक नहीं रहता। सो एक पैटर्न में आ रहा है, तो आप बने रहिए चैनल पे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा 2009 का पेपर, आज ही दोनों पेपर जून और दिसंबर दोनों का पेपर आज रात तक अपलोड हो जाएगा। सो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।